Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. I think Good Good morning, morning. sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Turn off your mics and we'll just start in a few minutes. I think my slides are shared, perhaps. Am I able to share the slides? No. Asad sir, we cannot see your slide right now. I'm trying, but I think there's some technical issue. It happened I'm just, yesterday. I'm just removing all the host management so you can. Please. Yeah, I've just removed. You can now check, please. अभी भी dismiss कर रहा है यार वो. It is not connecting. विंडो कनेक्ट होती है, शेयर करता हूँ उसको, फिर दोबारा वो डिसमिस कर देता है. मजर इज अराउंड. मजर. Yes sir, I'm here sir. जी हाँ sir. यार करो, इसे नहीं हो पा रहा ये. कल भी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था वो. हालांकि स्लाइड्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन डिस्कस, बट द थिंग इज दैट. अरे मैम आपको एक मिनट. Sir, I've removed all the host management. Now you can try. Please try. It's not working. नहीं हो रहा. सर आप लॉग आउट करके एक बार लॉगिन फिर से कर लें अगर हो जाए तो. It is not working. Mazhar, it is not working. Hello. Hello. नहीं. हाँ, it's not working. Good morning, participants. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर तो दिया. Okay. Off है देखो ना. Sure. Okay. Asad bhai, good morning and welcome morning. to our second Thank you. batch. Thank you so much for your time. I think your presentation will be sorted shortly. And good to see more than 100 participants are already here. So can everybody be on mute now so that we welcome the resource person? Sure, ma'am. Thank you. Thank you so much. Well, please join me in welcoming Professor Asadullah Khan from the Department of Biotechnology, AMU. He's also been the director there. And he is, I should say, a master in research excellence by way of his own output of research and by way of his empathetic guidance to his research scholars, the kind supervision that he does, and many awards and accolades having come his way. Plus, Professor Asad is also heading the IQAC here at AMU. So just the right person. मैम आपका माइक म्यूट हो गया है. मैडम आपकी आवाज नहीं आ रहा है. Ma'am, mic has been muted. Ma'am, you're not audible.
Just wait, participant. Just wait. Just wait. I don't know. Am I audible now? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. There was a little cord disconnect because of which you couldn't hear me. So now we have with us Professor Asadullah Khan, as I said, from the Department of Biotechnology to speak to you on excellence in research. He's also heading the IQAC here at AMU, and under him we got a NAC A plus grade, and he's been highly decorated with awards as a scientist, and his research output is certainly enviable and formidable. So thank you so much for your time with us, Asad bhai. अभी भी आवाज नहीं आ रही है. No, it is audible. Okay. Some people are still writing that they can't hear me. It is So, Asad bhai, we look forward to your valuable presentation, and we thank Okay. you immensely for your time. Time is money, and for a busy person like him, it's just his commitment that we get to hear to his very, very valuable presentations. Over to you. Thank you. Okay, thank you so much, Dr. Faida, for your nice introduction. I'm trying to connect my presentation. Is it visible to you, friends? No, not No, as yet. No, sir. Not yet. Not yet, sir. I'm not able to share it. Some technical glitch. I think they are mentioning can't share your screen. Sorry, an error has occurred when screen sharing. So there's some technical problem. I think Mazhar can solve it if he's around. Sir, I'm checking. Sir, I'm checking. Everything is okay from my side. I have just opened the things. Yeah, I don't know why it is not working. I'm sharing the window and clicking the share Sir, sign, but please it is try not to share the entire screen. okay. Let me check. Sir, kindly start your introduction. We will get, and later on we will see the PPT presentation. I think presentation. Yeah, I think it's done now. Perhaps let's see. Yeah, we can see. Are you Yes, able to sir. see the presentation? Yes, sir. Now we can. FIP21. Go ahead, sir. Are you seeing my first slide? Yes, sir. Yes. Go ahead. Second slide. Yes, sir. Yes, sir. Working. So let me do it like this. Okay, friend. Thank you so much for being with us today, and very good morning to everyone. I'll be talking on research excellence, and research excellence is based on my personal experience. Is there any echo in my voice, or some background voice is coming? No, sir. Perfectly all right. चलें, ठीक है, ठीक है. साहिल मैम माइक ऑफ कर लीजिए. Right. So मैंने कुछ I have jotted down certain points in my slides. These are not very formal slides, but based on my thoughts and my experience, I've penned down some points where we can discuss and we can talk on how you can improve the research excellence. Now, basically, research excellence is something which what you are doing, what is the output of the research, and that is acceptable to the society, acceptable to the community. I think this is what I think the ultimate outcome of the research, and that's what excellence means. Excellence does
also it means that academically, if you talk about the high impact publications and patent and kind of things, that is one thing. Obviously it is one of the measures of your excellence of your research. But ultimately what I feel is excellence must also involve in the translation part of your research, so that your research can go to the society. Because if research is not going to society, it means you are not justifying to the public funds, to the grant that you are receiving to perform a research, whether it is a direct grant to you or grant through your institutions and through your colleges. So what we have to do, and how to proceed in research. So I'll start right from beginning. Suppose if I've been appointed as an assistant professor or a research faculty or research scientist in institution, HEI or university or college or any research institution, then how to move on, what should be our activities and our movement and strategy to more go into the research paradigm. Now, as we all know that there are two categories of institution. One category is called academic institution. In academic institution, academic teaching institutions, you have only teaching assignment. So most of the colleges and universities, state universities, deemed to be universities, and even central universities, they have been given a teaching assignment to every teacher or every faculty members. The research part is not a mandatory. What I mean here is the mandatory means, like, if somebody is not doing good research, I mean, he will be paid, and he will be, get the incentives or any kind of a thing has been continuously given. Although practically, sometimes it happens that promotion may hamper because of the research not having done properly. But that research is of like a peanuts kind of a things, not very rigorous, not very aggressively done research. But other part of the institutions are called the research institutions, are laboratories, just as CSIR laboratories, DBT laboratories, are similarly in the science, arts and humanities laboratories like research institutions, ICR based institutions and others, where the research is the primary goal and primary mandatory part of the institution's mandate, or the main mission and goal of these institutions are the research, not teaching. So why I'm saying this, because I'm trying to compare the research institutions outcome I can name in case of sciences like IITs, IC Bangalore, and many institutions all across the country, those who are dedicated for research. But there are many institutions like AMU, JNU, BHU, DU, Jamia, Hyderabad University, and there are many more, all more than 600 universities or 1,000 universities in the country. These universities' primary goal is teaching and learning. Of course, research is also part of it, because research promotion will be based on research, unfortunately. No teacher is promoted based on the teaching, but on the research in major cases, especially in the universities. How many pages you have guided, how many papers you have, and so on and so forth. So this is kind of a driving force toward the research. But that research is not ending with the quality research, a research in excellence. As I've told you earlier, what does the research excellence means? Research excellence means your research is ultimately translating into the society. If you are doing research till you publish, or even I say till you patent, that's not research excellence. Research excellence is something which is outcome is directly in use of the public or the society. So that kind of research being considered as a research excellence, leading to research product or the outcome which is being used by the society, or the particular public funds, funded by public funded research. So based on that, there are certain points which I'll discuss with you, that how can you improve your research profile, how can you improve your careers onward, you being as in young faculties recruited in the colleges and universities,
or even in the institutions. So the first and foremost thing is I consider is a motivation and passion. If you have a motivation and passion, then only you can do research. There are many faculty that are recruited in the colleges and in the universities, but some of them, they are very motivated. Some of them, they are not motivated. So those who are really motivated and passionate in doing research, they will excel. But those who are not at all motivated, but they're just involved in teachings and a little bit kind of a research, and ठीक है साहब PhD जो है वो मिलना है, कोई स्टूडेंट्स आ रहा है तो उसको PhD को भी ले लेंगे वगैरह वगैरह. But I think they are not very motivated. So such faculty members may not excel in their research profile. And that also lead to, after motivation, you should also hardworking candidate, because hardworking is very important. Because I still remember when I was started my career in 1998, basically, and effectively in 2004 onward, after getting my postdoc. Then I used to spend in the lab at least 12 hours personally. Even the students can spend more or less, but I spend 12 hours. I used to come late nights. I used to spend evenings, and of course in the morning time for teaching, and after afternoon we used to spend our time in the research lab. I personally, usually universities, faculty members do not do bench work. They prefer like to guide the students and to give the students thesis. Okay, go with that. This is experiment protocols. They can distribute the protocols and ask students to perform the experiment. But I still remember I personally did bench lab in my lab after taking classes of masters in biotechnology. I used to go in the lab and work in the lab personally. I think this kind of a passion and hard work is very much required for getting excellence in the research. I think we should have this kind of a passion. Then comes to the manpower, because manpower here, what I mean is manpower. It is at the level of colleges and universities while recruiting the faculty members, as well as at your level as a PI in the lab to recruit SRF and GRF and RAs and some research positions. So what is the criteria to select manpower is the high caliber peoples, high caliber students, high caliber faculty members. And of course, besides recruitment, the retention is very important. How you can retain that students. Many times it happens that students join in the lab, but after a few months or year, they left the lab for many reasons. Behavior of the supervisor, the conditions of the lab, facilities of the lab, and so on and so forth. So in that case, you cannot retain that good students, because good students and a strong and high caliber staff and students can retain only when you provide them a good ambience, good environment, good research and ambience, good research culture. For that, you should have infrastructure. And infrastructure is mandatory for not necessarily be for science and technology, but even for arts and humanities also. So infrastructure not necessarily means like a high-end equipment, like a 1 crore, 2 crore equipment. But infrastructure means like you should have a proper setup to sit in an office. You should have a very conducive environment. You should have in your room AC and good conditions of a room, so that you can sit in a summer, right? You have a proper heating system so that you can sit in a winter, and you have a PC, laptop. So this is what the infrastructure is basically, I mean. And this infrastructure, even if required for the arts and humanities peoples, languages peoples, those who consider that they need not to have any kind of equipment for research. But this is a mandatory infrastructure. So how to maintain the infrastructures, that required the investment. अगर मुझे अपना infrastructure maintain करना है, तो मुझे उसको invest करना होगा उसमें पैसे को. Now again, next question: from where money to invest into the infrastructure, and that comes through grants. Don't dependent on. It is my suggestion to you. Don't dependent on the authorities, principal, vice chancellors, deans, and chairmen to support you.
Of course, this is a responsibility of the authorities. On the other hand, that to support their staff, support their faculty members, support their students, if you are PI in the lab, to get the good work, but don't dependent on them. The reason behind, if you've been recruited in a college or in a university, you have a big excuse. Sab mere paas to grant hi nahi hai, main kaise research karunga. Well, this is the genuine excuse. Your college is not supporting you. That is a bitter truth. Your principal is not supporting you for grant for research. It's a bitter truth. Vice Chancellor is not supporting in the universities for the research. It's a bitter truth. For many reasons, they can have excuse of not funded by the government, not funded by the management and so on. But this excuse should not be there any motivated and passionate researcher, because it is my responsibility that to work on, that to move on, right? If I work, if I want to work, I have to generate my own funds. I have to look into how to generate funds, how to get funds. Are you getting this point? So, for example, I've been recruited in AMU. I did not get any basic infrastructure from the universities except that the table and chair, right? Even not a computer. And one small Almira. Then I did not ask management to provide me laptop, to provide me system, to provide me AC. No. Because I know that the management or the university always has an excuse that we don't have funds. You're not going to sit on these excuses that to sit down and say, I don't have a funds. But I have to generate my own funds. And these funds are basically generated through extramural grants. And that I did. I wrote first grant in 2004 when I resumed my position after getting postdoc in 2004. That was a CSIR grant. And then onward, I've been, I don't find myself as a without grant even a single year in last 24 years. 1 or 2 grants always with me. And that make me, I'm not self-praising myself, but I'm just giving you to inspire you that how you have to move further to get a good research profile. Because without funding, you cannot do it. So this is the primary and foremost thing that to generate funds. If you cannot get grant, you have to collaborate with your colleagues, with your former institutions from where you did PhD or from where you did postdoc, whether it is in India or abroad, and try to do something in collaboration so that you keep life and you keep vibrant. ऐसा नहीं है सब आप कॉलेज में हम अगर because many of us in college, so if you're in college or sub state university where there's no funding, so there's no research, no, you can do it. There are many ways. You try to connect. अगर आप 10 लोगों के साथ कनेक्ट होंगे तो एटलीस्ट एक बंदा ऐसा होगा जो आपको कहेगा ठीक है, I can collaborate with you, I can support you. ठीक है, अगर आप मान लिए I'm established researcher in the field of my area, if somebody approached me who's a very feeble and very weak in research, definitely I don't get any benefit from him, but he will get benefit from me. So I can say no, I don't want to collaborate with you. Okay, I will collaborate with the higher person, those who are even much ahead of me in research. I try to collaborate with them. So this is a normal strategy, but it does not mean that everybody reject you. There are many people who are kind-hearted. They can, if you approach them, if they are working in the same field, they will definitely shake hand with you and say, okay, we'll connect. Because they what they need is your manpower. For example, you recruited a student and you say, okay, this is the brightest students we have selected in PhD. I don't have any infrastructures. I ask my colleagues, I ask my friends, and you can make some new friends through social media and ask them to connect with and say, okay, you just take him, and so they will get a manpower and you will get the degree. So both of you can be benefited. So this is how you can approach. But there's no excuse that sub, I don't have any funds, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं research नहीं कर सकता. This should not be like that. So infrastructure maintain करना. Project timeline is very important because time management in research is a very, very important thing. If I have identified certain problem to attain through some project, whether it is a funded projects
are non-funded research project, but there should be some set timelines. And these set timelines based on the objectives raised in that project. Now, once you get these objectives done in the timeline, you are successfully, or you are get a success in getting the projects completed. And that's how you can proceed further for the next projects. Mission and objectives is the very important. You should have defined some missions. What is the mission of your project? What is the mission of your research? And then accordingly, in the line of the mission, you should have objectives 1, 2, 3, 4, 5, 6. For example, just my example ek deta hu, uski simple example, because it's a common example to understand all of you, because I'm not going to give example of very hardcore research of my own area. I'm giving an example which is very general and understandable example, can understand through all diversified groups. For example, जैसे हमारा मिशन ये है किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी एंटिटी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी इंडिविजुअल का मिशन ये है कि साहब मैं इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, राइट? फॉर एग्जांपल, अलीगढ़ इज गोइंग टू बी स्मार्ट सिटी. So the UP government has a mission that to make the Aligarh as one of the cities, as this districts, as one of the smart city, called smart city, right? So they have to set certain, this is the mission in next 5 years and next 3 years. So there's a mission, objectives based on these missions. Objectives क्या होंगे? Objectives होंगे जैसे हमें health support को improve करना है. Objective number 1. We have to improve the school educations. We have to improve the road networking. We have to improve broadening the roads. We have to improve the malls and shopping malls and markets and all kinds of things. So all these are the objectives under the mission we call smart city, right? Then you have to have a project timeline. So first 6 months में हमें जो है road broadening करना है. Next 6 months में हमें malls पे focus करना है. Then next 6 months में हमें जो है school education और health system पे करना है. So like this, you have to set the timeline. Whatever projects you have, this is just an example I'm giving you so that you can understand. So this is what the timeline means. You have to set that, and each timeline should be defined based on the objective. तभी आप कुछ attain कर पाएंगे. If you are not able to set the timeline, then you lose or you lost the project continuity or the completeness. Who are the participants of the project? This is another question. Participants here means the manpower. If you are having funded projects, whom you recruit, आपको किसे recruit करना है, किसे select करना है project के अंदर, interview board में कौन members होंगे, all these things are basically responsible to the quality research. मान लिया आपने एक on force and source आपने एक incapable, non-competent candidate को select कर लिया because under pressure, then you cannot run the project. You cannot expect the high quality output from that project. ये फर्क होगा. और आपने बहुत competent बंदे को लिया, no matter whether he is having some source or force, but be honest and recruit some best candidate who can be a suitable candidate for that project, then you will get a success in that project. But all across the country, the major problem, I'm talking about the HEIs, institutions. The major problem is that in many cases, we found that the recruitment criteria is not credentials, but some other things. PR, I'm sorry to say, because I've been facing many, many years, rather decade, at least 2 decades, that the kind of appointments, the kind of recruitments for students, because I've been receiving a lot of calls from different neta. I'm not talking about the national or international neta, I'm talking about the local neta. Those who are from the universities like EC members and court member and this member and that member
एसोसिएशन वगैरह वगैरह। अरे साहब जरा ये मेरा फला दोस्त है, उसका बच्चा है, बच्ची है, जरा इसे आप देख लेना इसे। तो एक पोस्ट है आपके पास 10 फोन आ गए। चलो ये भी अच्छा है, उसमें से जो बेस्ट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एक पोजीशन पे। बट आई थिंक द क्राइटेरिया शुड बी टोटली बेस्ड ऑन क्रेडेंशियल। यू शुड हैव ए स्ट्रांग इनफ just for the sake of justifying the project funding, which is the public funds, and to recruit the best candidate to get a success in your project. So participant जो है strong होना चाहिए। ये सारे factors हैं, मतलब these are all points where if you missed any of the point or any of the things, then it will ultimately impact our research outcome. This is my experience for last 20 years. Expected key findings क्या हैं? That has to be clear very first day of your project. जिस दिन आप प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, जिस दिन आप प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं, उस दिन आपको ये पता होना चाहिए what would be the expected outcome. अगर ये expected outcome, if you're not aware about the expected outcome, then your research project, your research finding will of no use. Driving force ही नहीं होगा। आपको क्या मिलेगा? Nobody will give you the project. Government will not give you even a single penny if you could not convince the government funding organizations that what would be the deliverable, what would be the expected outcome and findings of your projects, which are directly useful for the society or for the mankind. You should enable ambitious research of the exceptionally quality in your ambience, so this is also true for the authorities like vice chancellors and heads and deans, जिनकी जिम्मेदारी है ये कि वो अपने subordinates, अपने faculty members या अपने staff को promote करें, because it is a two-way process at every level. Even if you talk about the PI and the student, it is a two-way process. स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छा ले लिया, हाई कैलिबर स्टूडेंट ले लिया, आईटी का एमटेक पास आउट है, यू गॉट एन पीएचडी इन योर यूनिवर्सिटी इन योर कॉलेज, बट if you are not giving time, if you are not promoting them, a supervisor, in other words, is not good enough to support, to guide, to provide the resources, to provide the funding, then he can't do anything. And if you have a full funding, full resources, very good experience, good guidance, but you could not get a good student, then again you fail to get good results. So दोनों मतलब it's a two-way process. इसलिए we should have the one who's getting good students and having good guidance should have a fortunate in terms of like giving output. So you have to plan right from beginning, recruitment of a good students, generation of resources and all, and so that you can produce the quality research. To invest in people, to support them and the research environment, thereby enabling the research endeavor to grow sustainably. For example, if I have a project of 1 crore, if I'm not going to invest that money to the research, but I'm just wasting the money here and there, obviously that does not make success in projects. So you have to invest somehow in the people, those who've been associated with you in the different capacities, so that it can change the world for the better. Otherwise, it's very difficult to. I've been working for last 25 years, focusing on one problem of antimicrobial resistance, and now I reached to in 20 years, almost 20 years. If you just exclude my 3 to 4 years of postdoc experience, considering my independent research in the area, in almost 20 years, I reached to the stage where I'm able to translate my research directly to the society. So for that, I'm very happy. But it took me 20 years. So it's a patience task. It's not an overnight task. If you research start and you end up with something very great success. No. It's a long, but you have to consistent and long-term process. I've been working for last 20 years, for day and nights for targeting one problem, and now I reached to that. Now I'm in a position to go for human trials, and I'm translating the research to the society,
in medical health sciences. So that's how one has to do it. And that basically changed the whole world. This kind of research is required. Now, again, if you look at the manpowers, faculty is another important component of institutions for affluence. As I have just told you in the beginning, that faculty members at the level of institutions and students at the level of lab are important. So you should attract and recruit, retain highest caliber staff. Now, how do you retain them? You retain them through supporting personally and professionally. अब आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, what does personally means? Professionally is fine. You are a head of the department, you are a PI of the students, you are giving support, you are providing the equipment, providing the lab, providing the computer, providing the infrastructures, providing the lab and office staff, all kind of things, well connected, connectivity and everything. This is called professional support. But I'm saying to retain the staff, you should have a personal support as well. This is very, very, very important. Even a professional support से ज़्यादा important personal support है. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. मान लीजिए आपने किसी को रिक्रूट किया and you recruited very high caliber बंदा. You are in Delhi and you recruit that person from Chennai or from some quite far distant place. उसके बाद वो यहाँ आ गया, उसने ज्वाइन कर लिया. अब he or she want to come to along with bring their family to join with the kids, but he don't have any house to live near the house. He don't have any vehicle right away to commute. ना उसके पास गाड़ी है, ना उसके पास घर है ना, कैंपस में कहीं कुछ नहीं है, and वो एक कमरा लेके रह रहा है, माने just for as a bachelor's kind of a life, and he's living in a campus around so that he can move on, walk down, and रोजाना वो classes ले रहा है, फिर आप research का भी pressure है उस पे. तो if you're not supporting, you means like I'm talking about the different levels. Try to understand. For example, if I am a PI, मेरे साथ कोई स्टूडेंट अगर आया है तो उसकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सपोर्ट करूं, उसको घर दिलाने में, उसको कमरा दिलाने में, उसको अच्छा एनवायरनमेंट दिलाने में, उसके अगर बच्चे हैं, बीवी हैं तो, या उसके फैमिली है तो उसके फैमिली को सपोर्ट करने में, उसके बच्चे को स्कूल एडमिशन्स कराने में. उसको नहीं पता कि कहाँ शॉपिंग होती है, कहाँ से क्या चीज़ खरीदी जाएगी, शुरू में उसको चीज़ें परचेस कराने में. एंड दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट दैट पे अ लॉट. If you're providing the best support, and this is, I'm not saying this at my own, but these are the things which are being provided by the universities like MITs, Harvard, Oxford, Yale. I mean, you just name top 10, 20, 150 universities in the world. Now, all these universities have these practices of supporting the staff, and that's how the staffs retain. Now, if you look the average retention time of the faculty members in the institutions like MITs and this, it goes to like 10 years, 15 years, 20 years, even more. But if you look in many small universities in India, I have been in many accreditation survey in various colleges all across the country many times. So I found the retention time is 6 years, 4 years, 5 years, 10 years maximum. So the very reason is that university is not supporting the staff either through their good wages, salaries. That is a basic thing. And on top of that, not to the supporting the families, supporting the kids, health support, care support. So all these things are also part of it to add up flavor in the research. For example, अगर मुझे कैंपस में मैं रह रहा हूँ, मुझे घर मिला हुआ है, बेहतरीन एम्बियंस है, वहीं एक
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर जो है मैं रात में आ जाता हूँ, दिन में चला जाता हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस है, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, तेल मेरा खर्च नहीं हो रहा, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल. सो ऑब्वियसली I can spend a lot of time in my research. Because I mean, otherwise if I've been living like a 20 kilometers away from my institutions, or 30 kilometers away from institutions, and I've been commuting 2 hours daily up and down. So I'm so tired in the night, I cannot think of any subah फिर मुझे भागना है, फिर आना है. So this kind of a life is basically not supporting to the research. For that, the institutions of a high caliber institutions, they always support. Even in India, if you talk about the ISC Bangalore, if you talk about the IITs and various national laboratories like NII, ICGB, they all have a good ambience, good quarters for the teachers, for the faculty members, hostels for the students, for international students, right? So all these things are basically also supportive. Now, then come to the collaborations. किसी भी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए collaboration is a very, very important. Although you are very, very strong in in your area of research interest, but probably that could not suffice to the level that you can reach to the state of the art research. So for that, you need to have you must collaborate with some laboratories, those who are working in that particular area. So our institute, our HEI has to work with the partners to create a world-class regional innovation ecosystem. So now there's a time of innovation. Now we are talking about beyond research excellence. So once you reach research excellence and you would like to translate your research to the society, then you need to have something like innovation ecosystem or innovative ideas, how to generate the innovative ideas, right? To build a strong and more constructive relation, right, with the local and regional community. So this is also part of institutions or laboratories. For example, I'm working on AMR, so I've been working for awareness programs as outreach program for community, and these communities are benefited by my outreach programs because I used to visit distant places. I used to visit different hospitals, different OPDs, right, to educate the paramedical staff, to educate the patients, and to educate the community in order to, beside my core research, to make them aware. So this kind of a linkage and research linkage, social linkage is very important for any kind of research, which is directly benefited to the society. Not only this, but in order to educate them also for the civic sense, for maintaining the better country infrastructure. For example, आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी लैब है, उसके चारों तरफ जो है वो जो एरिया है वो थोड़ा सा ऐसे लोगों का है जो बहुत दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, दे आर लो प्रोफाइल पीपल्स. तो वो उसमें उसको जो है वो गंदा करेंगे. द वे दे लिव इज नॉट गुड इनफ to be appreciated by peoples in and out. So in that case, it is your responsibility to educate them, to make the whole ambience, a whole environment good and better in a way that so that way if individual efforts goes on, then the whole country will be in a shape that could be appreciated by everyone. To engage with the public and policymakers to shape out the research policies in order to implement into the society benefit, for the society benefit. जो रिसर्च हम कर रहे हैं, जो रिसर्च आप कर रहे हैं, वो इस लेवल पे होना चाहिए कि हम उसकी एविडेंस बेस्ड पब्लिक पॉलिसीज बनाएं और हम वी रीच टू द पॉलिसी मेकर्स both in education and in different sectors, research, in health, in agriculture, in education, right? And so that make us in better shape. This is also responsibility of. So when you have a good researcher, good high quality research, then only you can contribute to the policy makers to make the policies. Through our international engagements of universities should aim to maximize the global social, culture, economic benefits, right from our research and scholarship. So जो
रिसर्च हम कर रहे हैं, जो स्कॉलरशिप हम कर रहे हैं, जो हमें चाहे वो चेयर की फॉर्म में हो या बहुत सी यूनिवर्सिटीज में चेयर्स होते हैं डिफरेंट नेम्स के, scholarships होते हैं कुछ, right? These scholarships basically are for the scholars, those who are doing research, but that should reflect to the society in the form of maintaining the cultures and economic benefits for the society. This is also very important for research. Now, institution has to manage the financial resources to ensure the university's long-term sustainability. आपने रिसर्च लैब डेवलप कर ली, उसके बाद आपने काम किया, रिसर्च की, उसके बाद 1 साल बाद 2 साल बाद जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, रिसर्च आपने बंद कर दी. इट्स नॉट लाइक दैट. You have to continue. Once you got the project, you got the equipment, then you have to try to make and try to sustain that equipment for a long time, right? And that is the, again, generation of through funds and through resources, whether through college and university or through management or through your own extramural fundings that can help you out. For example, आपने जो है वो एक सिस्टम लगाया, उसमें यूपीएस एग्जांपल दे रहा हूँ, यूपीएस जो है ना, आपने 1 लाख रुपए का आपने यूपीएस लगाया 20-30 minutes बैकअप का. Now after 3-4 years batteries are down and UPS is lost. अब आपका इक्विपमेंट बंद हो गया, right? So this is how you have to sustain. Again, you have to generate some money to spend more 50,000 rupees to change the batteries and again to run the UPS so that your equipment will continuously in a running shape. So this is what the sustainability. This is one example. Likewise, the whole setup for whole lab, for whole institution, for whole kind of. Now, अब तो हम पूरे देश, पूरे country की sustainability की बात कर रहे हैं, because UGC is trying to, Education Ministry and UGC is trying to talk about the agriculture and health sustainability. So they are proposing so many proposals for the aspirants to work on the sustainability. To ensure the government public funding provides by the environment and which promotes world-class research and education, to continue to invest in information technology capabilities to enhance the quality research and education. So all these things are the development of infrastructures as per the requirement. You may need have information technology to support your research. So without, आज के ज़माने में without information technology, अब जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, this is because of the IT. We are able to connect each other. We are able to connect in online discussion, right? So all these things are good enough to maintain and to required for the good research environment. It should also raise funds to support the high caliber students, invest staff, faculty, and the research, and provide new resources and infrastructure setting. Now, in next 10 minutes, I will talk on the core values of the research. Now, this is what we have talked so far, is the supporting parameters which support the research further. जो आपके रिसर्च को, लेकिन रिसर्च करना कैसे है, रिसर्च की ABCD क्या है, रिसर्च को एक्सीलेंस लाने के लिए अभी तक हमने जो बात करी है वो सपोर्टिव थिंग है. दीज आर द सपोर्टिंग पैरामीटर्स विच सपोर्ट आवर रिसर्च, या वो फंडिंग हो, या वो रिक्रूटमेंट ऑफ गुड फैकल्टीज एंड गुड स्टूडेंट्स हो, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, या वो फंडिंग हो, या सपोर्टिंग स्टाफ हो, right? All these things are basically the part of the support to the research. Now, what exactly the research is? How do you proceed for the research? So the number one and the foremost thing is the transparency, right? Transparency means your research should be transparent, right? We all know the transparent means very clear, crystal clear. Whatever you propose, whatever you discuss, what methodology you talk should be very transparent. There should not be any hidden agenda in the research. From those, whether they are students or those are the collaborators. Many times what happens, I know people, those who are kind of PIs, those who guide students, but they never told students कि आपका main theme, ultimate goal क्या है. The day students join in your lab, or the day you join, your goal should be defined. In next 3 to 5 years, what is the possible outcome and what would be the goal of your 3, 4, 5 years goal? This is what the transparency means.
Many times what happened, those who are very smart PIs, the thought of they are very smart, but they're not smart. I don't consider them as a smart. They are they do unethical things. They guide the students, they generate the data, and they hide the data. And then if they found the students is good enough, they're loyal, then they provide the data to student to get the PhD submitted. If not, then they hide the data and ask the students, and they keep like troubling the students, परेशान करते रहते हैं स्टूडेंट को. उसके बाद जो है वो डेटा छुपा लेते हैं. उसका नेक्स्ट स्टूडेंट्स को आएगा उनका अच्छा, उसको दे देंगे वो डेटा. And it happens many times. I have received several complaints. So this is not transparency. ट्रांसपेरेंसी मीन्स जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसको सारी चीजें एक्सचेंज करना है आपको. आपने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, आपने कोई कोलैबोरेटर है आपका, आपने उसका यार हम आपका नाम इसमें डाल रहे हैं, आपने ये काम किया है, आप अपना एड्रेस भेज दिए, उसने भेज दिया, आपने डाल के भेज दिया. नहीं, यू सबमिट द मैन्युस्क्रिप्ट, यू सेंड द मैन्युस्क्रिप्ट टू योर फ्रेंड्स, टू योर कोलैबोरेटर, एंड let him or her read the whole manuscript, each and everything, whether he or she has contributed a little bit. This is what the transparent, because he should know, one should know, he or she should know what exactly you have done. So this is what the transparency, and that kind of a culture we have to develop in our system. This is what generally in many laboratories, even in abroad, I know people in USA and other places, being a human beings, even they don't have this kind of a transparency. Inclusiveness. Everything has to be in a mode of inclusiveness. Right? If there's no inclusiveness in a research, then you can exclude so many things which may be important for your research outcome. And so inclusiveness is very important. Diversity is very important even now today. Earlier it was not so important, because suppose if you're working at one aspect and you end up with some results and you publish and you get outcome. But now diversity is important, because you cannot publish your result. You cannot publish your results without having diversified experimental strategy or diversified data. It means your support to the results that you obtain should be in diversified evidences based outcome. So you have to perform, like, for example, in my case, I'm working in biology and biotechnology. You could have some idea, flavor of the molecular biology, immunology, bioinformatics, animal science, and so on. So like this, you could have all these things should have added the flavor in the research. Imagination is very important. If you don't have imagination property, imagination capacity, then you cannot be a good researcher. So imagination capacity is very, very important. I think अस्सलाम हाँ मिल गया मैं देख लूँगा. हाँ ठीक I'll share you. Thank you Nitin. So imagination is very important, and practicality is also very important. You are imagining something which is non-practical is not acceptable. Right? But imagination leading to practical significance, implication, but it is non-ethical without approval is not acceptable again. So you should have the ethical approval of the research also. If it is concerned to some human subject, whether it is a science, technology, or it is the arts and humanities, even like social science, there are many cases where you have to work on a human being. You take a data from human, you take a questionnaire from human. So that approval is very important. If somebody is not giving the personal data to anybody, you are not supposed to take. डॉक्टर अगर पेशेंट से कोई चीज पूछ रहा है और पेशेंट उसको हाइड करना चाहता है, तो पेशेंट हैज अ फुल राइट टू हाइड इट. नहीं बताना चाहता, वो नहीं बता सकता. आप डॉक्टर नहीं पूछ सकता, या डॉक्टर उससे वो चीज किसी को देना है रिसर्च की फॉर्म में लेके उस डेटा को, तो जब तक पेशेंट की कंसर्न नहीं होगी, डॉक्टर हैज नो राइट. सो दिस इज कॉल्ड एथिकल अप्रूवल. फॉर दैट द कमिटीज हैव बीन मेड, इंस्टीट्यूशनल कमिटी हैज बीन मेड टू परफॉर्म दैट exercise. Now, how do you write a thesis? Thesis is basically
the very first foremost thing is, now I'm coming to the direct point to you. You as a faculty member, as a join, or you as a teacher, when you start your career, research career, you proceed right guiding thesis, whether it is a master's thesis dissertation or it is a PhD thesis dissertation or MPhil, because MPhil is a आजकल नहीं होता है तो, but it is optional. Then पहला काम क्या होगा सबसे? The first and foremost thing is a literature search. Note down. Number one, literature search. जब तक literature search आप नहीं करेंगे, you cannot give any problem to your student, or you cannot initiate any problem without literature search. आज के ज़माने में literature search is not a big problem. Just sit on the internet, look at the site, PubMed, Google, right? And there are many more sites are there. You just search out the literatures and see what kind of a work is already established in this area you want to work and what is left. So जो चीजें नहीं हुई हैं उसको आपको focus करना है. So this is what we call the connecting the dots. Then dot 1, 2, 3, 4, 5. So you connect the dot. Novelty, originality, and innovation is very, very important. Your idea should have a novel idea, should have an original research and innovation. उसकी application होना चाहिए. Applicability is very important. वाली आपने आइडिया कुछ ऐसा ले लिया जो बिल्कुल नॉवेल है, बट इसका एप्लीकेशन कोई नहीं है, सो उस रिसर्च करने से भी कोई फायदा नहीं. नीड बेस्ड रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द नीड बेस्ड रिसर्च मींस? नीड बेस्ड रिसर्च मींस दैट यू आर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च. मैं इसकी मिसाल ये देता हूं, जैसे आज के जमाने में कोविड-19 एक हैवॉक है, एक प्रॉब्लम है, या वायरल डिजीजेस बड़ी प्रॉब्लम है. इन्फेक्शंस, एवरी सेकंड पर्सन इज हैविंग सम थ्रोट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, थ्रू वायरल और थ्रू बैक्टीरिया. So the need, today's need is the infectious diseases. I'm talking about the health science, right? आज की जरूरत जो है, करंट जो इस वक्त नीड है, वो even not cancer, I'm telling you. It's not cancer. Current need जो है वो infection control and antimicrobial resistance है. WHO has declared as a priority research area. क्यों? हालांकि it has nothing to do talk about this because it's a different thing, but I'm not talking core subject. But the reason behind is that WHO has declared by 2050, 10 million people will die every year. आज की तारीख में 700,000, 7 million people मर रहे हैं, 7 lakh people मर रहे हैं हर साल. Now, next 20-30 years, it goes very high. And that's called the AMR, antimicrobial resistance pandemic. You can call them as a superbug pandemic or AMR pandemic, but it's the next pandemic. And that pandemic is worse than COVID-19 pandemic. Right? And it is more prone to be in Indian subcontinents like India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, and these subcontinents. For many, many reasons, which I'm not going to talk about at this moment. Some other time, if we get chance, and we can discuss on that. Or if you are interested, then I can, because we are working on awareness, because this is a very, very, very important point. You must learn how to control AMR, right? This is what you have to learn. For that, I have to work a lot in outreach programs and through YouTube channels. I have developed my YouTube channel. So I have put a small videos in English and Hindi and some type of skits on that to make the people learn how to protect. Otherwise, in next 20 years, you find the death rate will be increased tremendously. आज की तारीख में जो deaths हो रही हैं, वो 90%, 80% death जो हैं, वो because of AMR हैं. Not because of cancer, not because of except heart attack. Heart attack is entirely different thing. But cancer patients are surgical patients. They are dying because of the AMR, not because of the cancer itself. The problem. So this has to. सर आपके चैनल की लिंक सर एक बार शेयर कीजिएगा प्लीज. मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा. उसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं. रिसेंटली अभी हमने डेवलप किया है उसको. वो बेसिकली इट इज अ स्पॉन्सर्ड हमारा प्रोजेक्ट है. इट्स अ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
where we are trying to develop that kind of thing. तो मैं उसको at the end of the lecture ना मैं आपसे share कर लूँगा, no problem. Okay, sir. So this is what technology. Then come to the methodology and strategy. What are the methodology to be adopted in research? ये आप पे की जिम्मेदारी है. आपका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही मेथोडोलॉजी होगी. मतलब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि साहब मुझे जो है वो कोई ड्रग डिजाइन करना है, तो ज़ाहिर है उसकी मेथोडोलॉजी, ड्रग डिजाइनिंग में जो मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व होती है वही मेथोडोलॉजी होगी, है ना. आपको जो है वो सोसाइटी से लोगों का डेथ रेट का डेटा लेना है, तो जो मेथोडोलॉजी होगी वो अकॉर्डिंगली ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव होगी. सो मेथोडोलॉजी इन स्ट्रेटजी शुड बी टेक्नोलॉजी बेस्ड टू मेक द गुड क्वालिटी रिसर्च. देन वैलिडेशन, दैट मेथोडोलॉजी शुड बी वैलिडेटेड. अब आपने काम किया, मेथड पूरा अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी यूज करी, बट वैलिडेशन आपका नहीं हो पा रहा. सो वैलिडेशन शुड बी एट अ सेटिस्फैक्शन लेवल. डेटा शुड बी सेटिस्फाइड विथ कंपेयर टू द अदर डेटा. डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ मैं एक चीज आपसे कहूंगा, मेरी टाइम व्हाट हैपन, आपने रिजल्ट डेवलप किया आपके स्टूडेंट्स ने, आपने, एंड देन यू से साहब इसमें तो कुछ रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, एंड जस्ट थ्रो इट आउट, नेगेटिव रिजल्ट्स है. तो मेरे हिसाब से मतलब एटलीस्ट आई माई सेल्फ कंसिडर देयर इज नो नेगेटिव रिजल्ट. देयर इज नो नेगेटिव रिजल्ट. एवरी रिजल्ट इज पॉजिटिव. द ओनली थिंग इज दैट हाउ टू इंटरप्रेट दैट रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप गए एक एरिया में गए, मैं तो बहुत जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, मैं बहुत ही साइंटिफिक स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं बहुत जनरल एग्जांपल ले रहा हूं. आप गए किसी शहर में गए, आपने वो देखना है कि यहाँ कितने लोग जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस, कितने लोगों को परसेंट ट्यूबरक्लोसिस क्या है पीपल. एक लोकेलिटी है वहां पे, मे बी 10,000 20,000 पीपल्स आर लिविंग देयर. आपने टेस्ट करना शुरू किया, वहां पे आपको कोई भी बंदा नहीं मिला जिसको ट्यूबरक्लोसिस है. आप क्या कहेंगे इसको? नेगेटिव रिजल्ट? इट्स नॉट नेगेटिव रिजल्ट, इट्स अ पॉजिटिव रिजल्ट. No, sir. आपको ये पता चल गया कि साहब देयर इज नो टीबी पेशेंट. सो दिस इज योर इंटरप्रिटेशन. ऑलराइट. सो व्हाटएवर you are based on the data generation, whatever data came out in the form of result, our information, our output is interpreted as per your objectives. This is very, very important. And this is true for, मैंने बहुत simple example दिए भी आपको ये, and this is true for each and every aspect of research in each and every discipline all across the science, life science, engineering, medicine, technology, arts and humanities, commerce, law, and everything. So this is what very important. And then, of course, after getting interpretation, you have to go for conclusion. So this is the complete setup of your whole kind of a thesis that you can find. Now, let's come to the research committee. ये मैं बात पहले बता चुका हूँ, बट ये जो आप रिक्रूट करेंगे उसके लिए क्या हमें करना है. रिसर्च कमिटीज कैसी बने हमारी, मेंटर, एडवाइजर्स, स्टीयरिंग कमिटी, क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, पब्लिकेशन, पेटेंट. दीज आर थिंग विच आर एट द एंड ऑफ द रिजल्ट. आपने रिसर्च कर ली, RSC, RDC अलग अलग नाम होते हैं, उन्हें कमिटी ने आपको रिसर्च को मेजर करना है. ये देखना है कि सब रिसर्च हमारी किस स्टेज पे पहुंची, एक्सेप्टेबल है नहीं है, पब्लिश हो सकती है नहीं हो सकती है. इन सारी चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, you have to make the कमिटी जिसमें एक मेंटर होगा, you are the mentor, एडवाइजर, देन एक कमिटी होगी, 2-3 मेंबर्स की कमिटी होगी. तो who will be the committee members? Experts should be the committee member. आपने क्या किया, आपने अपने किसी फ्रेंड्स को बना लिया, दोस्त को बना लिया, या किसी और वीक पर्सन को बना लिया जिसे आप समझते हैं यार ही इज नॉट वेरी स्ट्रांग इन काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव कमेंट देगा, कभी नेगेटिव देगा. वो आपका दोस्त कोई, अगर आपकी कमिटी में, रिसर्च कमिटी में कोई आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, वो आपको कभी आपको आपकी क्रिटिसाइज करेगा? कभी नहीं करेगा वो. हालांकि अच्छा दोस्त है तो करना चाहिए. गुड फ्रेंड्स आर ऑलवेज क्रिटिसाइज फॉर द गुड, नॉट फॉर बैड.
सो क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे आप पेपर भेजते हैं बाहर पब्लिश करने के लिए, तो कितना क्रिटिसिज्म आता है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ये आप करके भेजिए, तो रिवाइज होता है, फिर भेजता है दोबारा, 3 दफे रिवाइज कराता है अच्छे बड़े बड़े जर्नल्स में. तो दिस क्रिटिसिज्म मेक यू एम्यूलरेट यू, मेक यू बेटर एंड बेटर एंड बेटर. तो कमेटी आपको स्ट्रांग बनाना है. ये सब मैं आपको टिप्स दे रहा हूं ताकि आप कैसे इसको आगे अपने रिसर्च में इंप्लीमेंट करेंगे. कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग. अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप कितनी अच्छी रिसर्च कर लीजिए, आई मीन आप आसमान से तारे तोड़ रही है, मतलब जस्ट लाइक एन एग्जांपल. बट इफ यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन एंड प्रेजेंट, then you cannot be a good researcher. You cannot be considered as a good researcher. So your presentation should be very good. Everything has to be presented well. And of course, finally, you have to publish or you have to patent your research. So publication is ultimate or patent. This is regarding supporting grants. ये मैं थोड़ा सा I'll just give you an idea about what kind of grants we have. Extramural grants जैसे होते हैं, right? I think presentation शायद stop तो नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है. एक्स्ट्राम्यूरल ग्रांट्स में ज्वाइंट ग्रांट, इंटर इंट्रा इंस्टीट्यूशनल ग्रांट्स होते हैं, मल्टी सेंटर प्रोजेक्ट्स आप सबमिट कर सकते हैं. डिपार्टमेंटल ग्रांट्स कुछ होते हैं, जैसे फिस्ट है, डीआरएस है, बिल्डर्स एंड पर्स एंड टेकअप, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल की ग्रांट्स हैं. तो देयर आर मेनी कैटेगरीज ऑफ ग्रांट वेयर यू कैन सबमिट इंडिविजुअल एक्स्ट्राम्यूरल ग्रांट, यू कैन सबमिट इंस्टीट्यूशनल ग्रांट, you can submit departmental grant to generate the funds, right? You can collaborate inter, intra, faculty, intra institutional collaborations. All kind of collaborations are accessible, are possible by the funding agencies. Now, finally, at the end of the day, how do you gauge your research? You gauge your research based on the publication, impact, H-index, citation. मैं इस पे ज़्यादा बहस नहीं करूँगा इस वक्त because of limited time. We have a limited time, but I think this is the big area we have to be explored. Some other time I can talk only on the concept of citations and concept of H-index, because it's a big problems and big kind of a confusion among the faculties and researchers, even the good researcher, that they're fighting on citations and H-index. Citation and H-index is an individual affair, is individual affairs of individual, and it increase with time. You can't do in citation. आप अपने citation बढ़ा नहीं सकते. आपके पास citation बढ़ाने की कोई डिवाइस नहीं है. पब्लिकेशन बढ़ाने की डिवाइस है आपके पास, आप ज्यादा काम करिए, लेकिन साइटेशन तो मैं साइट करूंगा आपका पेपर, मैं साइट नहीं कर रहा आपका पेपर. बहुत से लोग क्या करते हैं, आपका पेपर साइट इसलिए नहीं करते हैं कि आप का साइट कर देंगे तो आपके साइटेशन बढ़ जाएंगे, इसलिए आई विल नॉट साइट योर पेपर, आई विल साइट सम अदर. मैं अपने कलीग का पेपर साइट नहीं करूंगा, अपने किसी दूर का कोई साइंटिस्ट होगा उसका पेपर साइट कर दूंगा, इसलिए क्योंकि मैं अपने कलीग का साइट करूंगा तो उसके साइटेशन बढ़ेंगे. इस काइंड ऑफ अ कंपटीशन. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स are involved in citation and H-index, and not only at the individual level but even at the level of general. For example, if you talk about the nature, मैंने काफी बड़ी बात कर दी वैसे इस वक्त नेचर की. If you talk about the any journal, magazine, scientific journal, where the impact of the journal is dependent on citation. So what the journal wants that everybody should cite the papers which are published in their journal. मान ली मैं एक जर्नल चलाता हूँ, जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अब जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैं जो पेपर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो पेपर मैं कोशिश ही करूंगा, I haven't written anywhere in policies because that's an unethical act. लेकिन मैं चाहूंगा क्या कि साहब इसमें वो पेपर आए ज्यादा जो पेपर के अंदर जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साइटेशन ज्यादा हो. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जब साइटेशन ज्यादा होंगे तो मेरे जर्नल का इंपैक्ट बढ़ेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज द ट्रिक. सो इसलिए डोंट ट्रस्ट एंड डोंट बिलीव ऑन द इम्पैक्ट. इम्पैक्ट फैक्टर इज अ गेम ऑफ द जर्नल. Impact factor is, of course, is a measure of a journal's quality, but ultimately it's the quality of journals. High-tier journals like Nature, Science, Cells, they are high-tier. Impact factor उनका कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. And impact factor is always fluctuating. कभी भी constant factor नहीं होता है. हर साल जब review होगा तो change होगा वो. किसी साल citations बढ़ जाएंगे, impact factor बढ़ जाएगा. अभी आपने देखा होगा COVID-19 के ज़माने में impact factor सब journals के बढ़ गए थे.
जिसके इम्पैक्ट फैक्टर 5-6 थे, उनके 12-15 हो गए थे। उसकी वजह ये थी, नंबर ऑफ पेपर्स बहुत छपे थे, साइटेशंस बढ़ गए थे, एंड ऑब्वियसली इम्पैक्ट इट अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट ओवरऑल. सो बट the most important thing is Q1, Q2 journals, which we call quartile journals. And quartile journals are basically journals which are high tier, high quality journals. But impact factors and H-index and citations are also kind of a measures. Then how do you recognize yourself that you are a good researcher? आप कहाँ किस लेवल पे पहुंचे हैं? तो उसका तरीका ये है कि you have been known for invited speakers, invited reviewers, invited editors. So all these parameters are basically will in turn indirectly reflects your recognitions, and finally you have a patent and commercialization, technology transfers and granted patent. So मैं यहाँ ये सजेस्ट करता हूँ, जो पेटेंट खाली ग्रांट होते हैं या पब्लिश होते हैं उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है. उसकी वैल्यू सिर्फ आपकी सीवी तक होती है. समझे साहब? सीवी जिस दिन आपका खत्म होगा, मतलब जिस दिन आपका सीवी जो है वो होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी. लिहाजा पेटेंट डिस्पोज ऑफ होने से पहले पहले उस पेटेंट को आप कॉमर्शलाइज करा दीजिए. सो दोज पेटेंट विच आर नॉट पेड consecutive 3 years annuity fees, they are disposed of. If you continuously pay annuity fees, then you can save your patent for 20 years from the date of application, not date of granted. So then anybody can use that technology. So what is more important thing is that the most important thing is that you should have the most important thing that you should have basically the commercialization of the patent, right? Commercialization of the patent is very, very important, right? But of course it's not easy job. So for academicians it is always good to go for technology transfer, right? I think this is probably all about from my side, and I just stop sharing here, and before I discuss, I'll just share my YouTube channel. I have shared my YouTube. You just Google this and you reach to the channel, and I'll have certain important videos, for common videos for people's, and I think somebody has also shared perhaps. Yes, it is bio footprints, if I'm not wrong. Yeah, I think this is. I think this is not my channel. Nikhil shared one link. This is some others channels. It has my videos on that, my talks and this. But my videos, my channel is this. So you can okay, copy, or you can take the on chat box. You can just look at and copy and paste it. Well, so now if you have any question to discuss regarding the research excellence or anything regarding grants, regarding publications, regarding patent, H-index, or how to proceed, वगैरह वगैरह. So अगर आपको कुछ पूछना है तो you can ask quickly any questions or from the presentation part. Yes, please. May I ask in yes, please feel free. I have few queries. Yes. First, जो आपने बोला कि ये जो रिसर्च फ्रेंडली इकोसिस्टम के बारे में बोला. Right. Okay. So basically, sir, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज में होते हैं. हाँ. बट सर जो स्टेट फंडेड या स्टेट एडेड कॉलेज हैं, वहाँ हम कैसे रिसर्च फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाए? दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम. हाँ, मैंने आपको बताया था वो. उसमें देखिए टीचिंग का भी लोड होता है बहुत सारा. उसमें देखिए 2 तरीके हैं. इवन कॉलेजेस के अंदर भी, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मैं फंडिंग एजेंसीज के बहुत सारे रिव्यू कमेटी में रहता हूँ और कुछ टास्क फोर्स में भी रहा हूँ मैं. अब आजकल इधर नहीं हूँ.
तो वहाँ जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो कॉलेजेस के प्रोजेक्ट भी एक आध मैंने देखे, लेकिन बहुत कम होते हैं। 100-150 प्रोजेक्ट्स अगर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो कॉलेजेस के एक आध प्रोजेक्ट आएगा। स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स कम होते हैं, लोग लिखते नहीं है। लेकिन मैं बताऊँ स्टेट यूनिवर्सिटीज को, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अगर कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स लेके जाएंगे उनको मिलेगा, वो एनकरेज करते हैं, क्योंकि उनके पास अदरवाइज फंडिंग, गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है, तो एक्स्ट्राम्यूरल फंडिंग को वो इनकरेज करते हैं। तो इसलिए आई थिंक यू शुड राइट इट, नंबर 1। सेकंड, ठीक है प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिल पा रहा, इट विल टेक सम टाइम, आप कोलैबोरेशन में लिखिए। थर्ड थिंग इज दैट आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है, यू ऑलवेज गेट कोलैबोरेशन। उसका तरीका मैंने बताया, आप जैसे आपकी फील्ड क्या है, आपकी फील्ड? अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर था कि जो आपने बताया है, तो बेसिकली वो है सर फील्ड ओरिएंटेड रिसर्च और या लैब ओरिएंटेड रिसर्च, जिसमें कोलैबोरेशन आसानी से मिल जाता है कंपैरेटिवली। राइट। बट जैसे मैं ह्यूमैनिटीज का हूँ या मैं फिलोसफी का हूँ, बेसिकली फिलोसफी मेरा बैकग्राउंड है, वहाँ मुझे ये फंड मिलना या कोलैबोरेशन मिलना अत्यंत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट। नहीं ऐसा नहीं, फिलोसफी के डिपार्टमेंट्स जहाँ जहाँ हों, बाहर विद इन द कैंपस, बाहर, या उनको आप कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट करके उससे प्रॉब्लम डिस्कस करिए। भाई फिलोसफी में कोई ना कोई रिसर्च तो होती होगी, उनसे सर ये आइडियलिस्टिक वे में बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में यू नो द सिस्टम। I know, but I think it will take some time. But if you keep doing hard work towards that, attain that kind of a goal, you will attain it. आप कोशिश करते रहिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कोलैबोरेशन हो जाएगा। और थ्योरेटिकल रिसर्च आप कर सकते हैं, और जहाँ तक टाइम का सवाल है, वहाँ आप स्टूडेंट्स ले सकते हैं, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो स्टूडेंट्स लेने के लिए। तो उसका तरीका ये होता है, मुझे मालूम है कई स्टूडेंट्स को मैंने पीएचडी कराई है अपनी फील्ड में, जो कि रजिस्टर्ड कई ऐसी जगह पे थे जहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है। जैसे मुझे तो उस यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं पता कहाँ का है, कहाँ थी वो यूनिवर्सिटी, जहाँ की लड़की थी मेरे पास, तो वो यहाँ मंगलेतर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी थी पहले वो, फिर वो यहाँ आई, फिर उसको मैंने काम कराया, पूरा काम उसको मैंने 3 साल 3.5 साल अपने लैब में कराया, पूरा काम, पेपर मैंने पब्लिश किए, थीसिस मैंने की, अवस्को, बट मेन गाइड इज सम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, तो ही गॉट अ क्रेडिट। तो उसको डेफिनेटली फायदा तो हुआ, उसको पीएचडी की डिग्री अवार्ड हो गई, उसके कुछ पब्लिकेशंस भी ज्वाइंट हो गए, और उससे फिर वो आगे कैरियर बना के अपना प्रोजेक्ट लिख सकता है, आगे प्रोसीड कर सकता है, ग्रांट ले सकता है। तो टू स्टार्ट समथिंग आई थिंक यू शुड डू सम दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। आपने किसी को कन्विंस कर लिया, अच्छा देखिए उसमें होता क्या है, आपने किसी यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को भेज दिया अपनी रजिस्ट्रेशन करा के, तो उसको जैसे हम जो है वो 6 स्टूडेंट्स ले सकते हैं या 8 स्टूडेंट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है काम कराने की और हम 2-3 और लेना चाहते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी में हमें नहीं मिलेंगे। हमें अगर बाहर के बच्चे मिल जाते हैं, 1-2 बच्चे, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको आराम से काम कराएंगे। हमें एक मैन पावर मिल गई है ना, ठीक है। हमें 3-4 साल बाद हमारे पास पीएचडी गाइडेड हमारे पास 8 स्टूडेंट होंगे या 6 होंगे, लेकिन हमें काम जो है हमारे पास 10 या 12 का होगा। सो दिस इज हाउ दिस अप्रोच आई थिंक कुड वर्क अंडर दिस सिचुएशन। टू स्मॉल क्वेरीज, एम आई अलाउड? प्लीज अमित साहब बताइए। सर आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की थी जी सर। कोविड के समय में हमने देखा कि वुसान लेबोरेटरीज जो है उन्होंने मना कर दिया था। जब हम हायर इंस्टीट्यूट में जब ये देखते हैं, स्पेशली जब ये आपको मिलिट्री रिसर्च होता है या ये आपको बहुत सारे ऐसे रिसर्च है, या फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसर्च होता है, दे डू नॉट शेयर डेटा एट ऑल, कंप्लीटली, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। अभी भी हमें नहीं पता है कि हमें जो ये वैक्सीन मिला है कोविड का, उसका क्या एडवांटेज है, अभी तक हमको कोई डेटा नहीं मिला। तो गलत है। तो this is totally unfair. It's not fair. It is totally unfair thing, because data has to be दो चीज देखिए, डेटा फजिंग इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। डेटा फजिंग इज लाइक, आपको मालूम है यहाँ 400 लोग मर रहे हैं या 800 लोग मर रहे हैं आपके हॉस्पिटल में डेली, लेकिन यू आर नॉट शेयरिंग द डेटा। सो दिस इज टोटली अनएथिकल। सो यही तो है ना, आपको जब तक आपके पास सही डेटा नहीं होगा, पैरामीटर्स क्लियर नहीं होंगे, आप कैसे अच्छी रिसर्च और इफेक्टिव रिसर्च कर पाएंगे।
तो और अवेयर कैसे हो पाएंगे, सबसे बड़ी बात है सर, ये हम अवेयर कैसे हो पाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताता हूँ। 2014 में मैंने एक सुपरबग डिस्कवर किया एक्सीडेंटली। आई गॉट दैट सुपरबग, वी कॉल्ड NDM4। अगर आप गूगल पे गूगल करिए अलीगढ़ सुपरबग के नाम से, अलीगढ़ सुपरबग, तो आपको उस पे मैं समझता हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ साइट्स आपको मिलेंगी। उसमें इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, मिंट ने और NDTV, तो लोग इंटरनेशनल, नेशनल, फ्रेंच मीडिया सब ने कवर किए वो न्यूज़। और अल्टीमेटली ICMR हेडक्वार्टर से मेरे पास कॉल आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICMR हेडक्वार्टर से कॉल आ गई। उस जमाने में प्रोफेसर कटौच जो थे वो थे, ही इज गुड फ्रेंड, मतलब अच्छे मुझे बहुत मानते थे वो। तो मुझसे बोले, उन्होंने मुझे वहाँ खिंचवा लिया, आई कॉल इट, बुलवा लिया उन्होंने मुझे। बोले यार हेडक्वार्टर में आइए आप। वहाँ उन्होंने मीटिंग रखी। एक उस जमाने में गंगा मिशन पे एक प्रोग्राम चल रहा था, गंगा क्लीन के ऊपर, गंगा मिशन था। हाँ, गंगा क्लीन पे, हाँ नमामि गंगा। तो उस पे उन्होंने वहाँ एक मीटिंग चली थी, उसी मीटिंग में उन्होंने मुझे स्पेशल इनवाइटी बुला लिया। बैठे रहा, मीटिंग के बाद सब चीजें हुई, तो उन्होंने कहा आपको खान साहब ये काम करना है। फिर मुझसे बोले वो थोड़ा सा लाइट मोड में, भाई ये बताइए आपने न्यूज में कैसे दे दी सारी चीजें, ये गलत है और नहीं देना चाहिए। तो मैंने कहा सर अगर मैं न्यूज में नहीं देता तो मैं आज यहाँ बैठा नहीं होता ICMR में। आपको, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द योर कंट्री। आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी, ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, इट्स नॉट लाइक टू बी कोटेड। हमारे हॉस्पिटल में, JNMC में जहां मैं बैठा हुआ हूँ, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, हमारा जो नेबरिंग कॉलेज है जहां मैं काम करता हूँ जिसके ऊपर, उसमें जो डेली डेथ रेट है सुपरबग से, वो 8-10 पेशेंट डेली जी NICU ICU में डेथ होती है। एंड आपके पास कहीं डेटा है उसका बताइए, कहीं पब्लिश हो रहा है डेटा? वो सिर्फ ड्रग रेजिस्टेंस और AMR की वजह से। जब तक डेटा ही नहीं होगा आपके पास, पूरे इंडिया का, इंडिया इज ए ओनली कंट्री in Northeast Asia and of course in other part like UK and Europe, जहां हमारे पास कंप्लीट AMR एंटीमाइक्रोबियल जो नेक्स्ट पेंडेमिक है जिस पे मैं काम कर रहा हूं, उसका डेटा हमारे पास नहीं है। अब ICMR ने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं अभी फरवरी में, जो वो ये कोशिश कर रहा है कि हमें डायनेमिक ट्रांसमिशन डायनेमिक्स की बात करिए कि ये फैल कैसे रहा है, जबकि ऑलरेडी हम वहां पहुंच चुके हैं, उस कगार पे खड़े हुए हैं हम कि मतलब आप बताएं ना, 2050 में कोविड से पहले की रिपोर्ट है कि 10 मिलियन लोग हर साल मरेंगे और 100.2 GDP लॉस हमारा कंट्री का होगा। और आज की डेट में हम कोविड के पास हमारा जो है एंटीबायोटिक यूज जो है वो तकरीबन 10 to 20 फोल्ड बढ़ चुका है। तो और पहले हम अटेन कर लेंगे। 2050 तो बहुत दूर है, 2040 में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए कोई हमारी तैयारी नहीं, कोई प्रिपरेशन है, कोई तैयारी है, कोई। तो दिस इज आई थिंक समथिंग विच हैज टू अवेयरनेस, हमें बहुत काम करना है इस पे, और डेटा को हमें बहुत फेयर रखना है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम रिसर्च लैब राइट, हम तो ट्रांसपेरेंसी लैब लेवल की बात करते हैं, लेकिन इवन आपने जो बात की इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोविड-19 के जमाने में बहुत सी चीजें ट्रांसपेरेंट ही नहीं रही हैं। आपको डेटा ही नहीं पता चला, आपको ये नहीं पता साहब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कैसे आगे हम बढ़ेंगे, कैसे इसके क्या रिपरकशंस क्या हैं, इसके इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये सारी चीजें भाई अमेरिका में तो लोग जो हैं वो, आपने जब तक किसी चीज पे कुछ मेंशन नहीं करेंगे और उसका कोई साइड इफेक्ट तो आपको सू कर देता है वो फौरन, वो you have a right to sue because of the same reason, because it is not transparent, you have hide something। यहाँ तक कि चाय के कप पे भी लिखा होता है बी केयरफुल इट इज ए हॉट, क्योंकि अगर आपने पी लिया और जल गया तो वो क्या कहता है, आपने इस पे लिखा नहीं गया इस पे हॉट है, हालांकि कप चाय हॉट कैलोरीज भी लिखा रहता है, वहां तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कैलोरीज भी होता है, बहुत कुछ होता है। हाँ, तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्लीज। वन सिली क्वेश्चन क्वेरी, वन सिली, नो क्वेश्चन इज सिली सर। नीड बेस्ड रिसर्च, या यस नीड बेस्ड रिसर्च का मतलब ये है कि जो आज के जमाने में जिसकी जरूरत है या जो रिलेवेंट है सोसाइटी के लिए, उस पे काम करना चाहिए। तो हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोशल वेलफेयर इंटरेस्ट and second is personal interest या individual interest, right and sometimes there will be conflict between social interest and individual interest। मेरा रिसर्च करने पर इस पर मूड है या मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, बट nowadays इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आज के टाइम, बट आई कैन डू बेटर।
especially in theoretical research. I'm not talking about lab research and field research. Right. Theoretical research. Right. So how can we short out? देखिए उसमें डेफिनेटली पब्लिक इंटरेस्ट तो आपका होना चाहिए, लेकिन पहला आपका अपना इंटरेस्ट है, बिकॉज समटाइम भाई आपका प्रमोशन है विच इज डिपेंडेंट ऑन पब्लिकेशन, देयर सो मेनी अदर इंटरेस्ट. सो फर्स्ट इज योर इंटरेस्ट एंड देन ऑफ कोर्स योर इंटरेस्ट शुड बी एक्सटेंडेड to the society also. That overnight तो नहीं होता है. जैसे मैंने you have started your research for today, then it will not reach society. अब जैसे मैं बताया ना, मैंने जो रिसर्च की अपनी काम किया मैं 10 साल से एक प्रॉब्लम पे काम कर रहा था, पीडीटी फोटोडायनेमिक थेरेपी पे. आज की डेट में वो क्लिनिकल ट्रायल में आ पाया है मेरा वो, और सोसाइटी में हम पहुंच पा रहे हैं. नाउ आई एम ट्रीटिंग माय पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल. सो दिस इज हाउ, इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट जर्नी. सो अगर मैं उसी बार सोच लेता यार ये सोसाइटी पे जाना चाहिए और मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो फिर तो आप बैठा रहता आदमी. आप स्लोली एंड दैट इज काइंड ऑफ इनपुट. कहते हैं ना ड्रॉप से जो है ना पूरी नदी भर जाती है, घड़ा भर जाता है. तो आप सोचे साहब एक ड्रॉप से कुछ नहीं होने वाला है. एक ड्रॉप ऐसा होगा आखिरी ड्रॉप जो भर देगा उसको. आपने 5 किलो आपको जो है वो आलू खरीदना है, तो एक आलू आखिरी ऐसा होगा जो 5 किलो कर देगा उसको. 5 किलो नहीं होगा वो. सो दिस इज लाइक ए ड्रॉप, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. आपके स्टेप बाय स्टेप यू रीच टू द लेवल दैट यू रीच टू द सोसाइटी डायरेक्टली वन डे, बट योर टारगेट शुड बी ऑफ कोर्स द पब्लिक एंड सोसाइटी. सर थैंक यू सर. ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो कैन आई टेक परमिशन टू लीव? सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी बताइए. जैसे वाई टेक्नोलॉजी हुआ या साइंस के जितने भी रिसर्च के फील्ड हैं, वहाँ पेटेंट तो हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज में पेटेंट किस तरह से करेंगे? क्योंकि इससे पहले मैंने मंगलायतन में भी काम किया. अच्छा. तो वहाँ बहुत सारे लोग आपके यहाँ से भी आते थे. जी. तो और पेटेंट भी थे AMU के साथ में. मंगलायतन के कई सारे पेटेंट थे, कई सारे रिसर्च स्कॉलर काम भी कर रहे थे वहाँ, लेकिन ह्यूमैनिटीज में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिला. Humanities में I mean this is I think experts in the humanities can think of, but I think पेटेंट तो देखिए IPR है बेसिकली. इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है पेटेंट में. आप IPR भी कर सकते हैं, अगर पेटेंट नहीं तो IPR कर सकते हैं. आप आपकी कोई फिलॉसफी है, कोई थ्योरी है, उसका आप IPR ले सकते हैं. IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड दैट कैन बी यूज फॉर कंसल्टेंसी, और दैट कैन बी, इफ यू वांट टू बी कमर्शियलाइज, that can be used for some consultancy or some other things. So IPR is also one thing. So IP, intellectual property right, is also as patent. So not necessarily be that you go for patent, but IPR is also. So there's a experts, IPR experts. You can discuss some attorney for the IPR attorney, and they can tell you. But they definitely there is a research innovation. There's an innovation in research. You have right to protect that property, that intellectual property. So not necessarily कि आपने कोई प्रोडक्ट ही बनाना है या कोई चीज मार्केट में लेके आना है, नहीं. आपका कोई थ्योरी, कोई फिलॉसफी, कोई हाइपोथेसिस है, उसका भी IPR होता है. You can also file the intellectual property so that anybody else cannot work on it if it is good to commercialize or for consultancy kind of things. Good morning, sir. This is Ramesh from Raebareli, sir. सर इंडेक्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं सर. इसका क्या मानक होते हैं और कितना कैसे अनुपालन इसका सुनिश्चित किया जाए? देखिए हाँ मैं बताता हूँ. H इंडेक्स बेसिकली क्या है, H इंडेक्स बेस्ड ऑन योर साइटेशन. साइटेशन तो ये होता है कि आपके पिछले 4 साल में या 5 साल में या इस साल में कितने साइटेशन है. जैसे 100 साइटेशन है या 1000 साइटेशंस हैं या इवन 10,000 साइटेशंस हैं. H इंडेक्स जो होता है वो ये होता है कि इट इज मोर ऑफ लाइक मूविंग टुवर्ड्स द significance of your research. कि एक पेपर आपका कितनी दफे साइट हुआ, that will end up with the total number of citations. 10 पेपर हैं आपके, 100 साइटेशन. लेकिन आपके कितने पेपर, जैसे H इंडेक्स अगर 10 है जी, तो आपके 10 पेपर ऐसे हैं जो एटलीस्ट 10 बार या 10 से ज्यादा बार साइटेशन. मान लिया आपके साइटेशन तो 1000 हैं, लेकिन आपके 1000 में 10 पेपर या 20 पेपर हैं आपके, या 100 पेपर हैं आपके, उसके 1000 साइटेशन है. तो रफली 10 साइटेशन पर पेपर हुआ. जी सर.
है ना। लेकिन आपका क्या है, इसके अंदर हर पेपर का आपका अच्छी रेपुटेशन है एंड पीपल से साइटिंग। लेकिन आपके साथ क्या है प्रॉब्लम, आपके साथ आपका साइटेशन तो आपका 1000 है, दैट्स प्रीटी गुड, बट आपका एक ही पेपर ऐसा था जो आपने कभी काम किया था, उसके आपके 900 साइटेशन है। बाकी किसी पेपर के आपके एक हैं, किसी के दो, बाकी किसी के साइटेशन ही नहीं है, तो आपकी एच इंडेक्स 1 हुई। ओके ओके, थैंक यू सर। So H index will the measure of the number of papers being cited number of time. जैसे मान ली मेरी H index जैसे 60 है मेरी H index जी, तो मेरी H index 60 का मतलब ये है आउट ऑफ 250 पेपर्स जो मैंने पब्लिश किए हैं पिछले 20 साल में, 250 पेपर, उनमें मेरी H index 60 आ रही है। 60 का मतलब ये हुआ कि 60 पेपर ऐसे हैं मेरे जिसकी साइटेशन 60 या 60 से ज्यादा है। कुछ पेपर ऐसे भी हैं मेरे जिसका साइटेशन 1000 है, एक पेपर है जिसका मेरा साइटेशन 1000 है, 1100 है, एक का साइटेशन 900 है, एक का 500 है, एक का 400 है। लेकिन एक 60 पे आन के रुक जाती है गाड़ी, वहां लास्ट पेपर मेरा ऐसा है जिसके 60, फिर उसके बाद कम होते चले जाते हैं। लेकिन 60 पेपर ऐसे हैं कट ऑफ पॉइंट पे जिनके साइटेशन 60 या 60 से ज्यादा हैं, तो माई एच इंडेक्स इज 60। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Is this clear? Yes sir, yes. Okay, so is okay? Can I close session or? Definitely sir, definitely. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Very important. Thank you, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Okay, thanks. Bye. Bye. Any news regarding next session? अरे ग्रहरी जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए फोन पर बात करते हैं तो पब्लिक